I don't always know it's you because you seem to inhabit so many different characters with your voice. Right. That it's not always clear that it's you. Right, exactly. It's interesting. That comes from my personality and DNA, and it also just comes from being a complete huge fan of Prince. My father was a heavy still to this day Prince fan. That's all he was playing, and I just sat back and just looked. I could never tell when it was Prince for me. You know, he had a falsetto. You know, he had this baritone. He just gave you so many different emotions. You know, but I seen the way my father was always connecting with him, and I studied it. You know, alongside of lyricists, I've studied R&B. I've studied soul. You know, to even pop. You know, and eventually all these things, you know, gathered up to how I connect and approach music. And it's really beautiful. It's a great journey you're on. Appreciate it. देखो मैं हिंदुस्तानी भाव तो नहीं हूँ, बट ईयरफोन लगा लेना ताकि एक बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस मिले. दिस ईयर वी पेड अटेंशन टू लिरिक्स लाइक मोर देन एवर, बट इफ़ यू आर अ कीन लिसनर ऑफ किड कडी, लॉजिक, 21 पायलट्स, पिंक फ्लॉयड, एमिनम और फेटल, you pay attention to musicality, you pay attention to mixing and mastering, or you pay attention to small musical details. It doesn't matter how good of a lyricist you are, एक टाइम पर तुम्हारे पास टॉपिक लिमिटेड होंगे या फिर वर्ड्स लिमिटेड होंगे, या फिर आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है कि वो जल्दी बोर हो जाते हैं एक टाइप के गानों से. एंड दैट्स वेयर दिस म्यूजिकलिटी फैक्टर कम्स इन प्ले टू सरप्राइज द ऑडियंस. सो वी गोना डिस्कस सम सिंपल इफेक्ट्स एंड हाउ दे अफेक्ट द लिसनर और लिसनिंग एक्सपीरियंस. देखा जाए तो इस साल ज़्यादातर लोगों ने फेटल को डिस्कवर किया है फ्रॉम TFT और TLS, और तुम दोनों ही प्रोजेक्ट्स देख लो तो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का एक अलग ही लेवल है दोनों ही प्रोजेक्ट में. हालांकि फेटल ने भी काफ़ी सारी रिमिक्सेस किए हैं, उसने भी काफ़ी ज़्यादा स्निपेट डाले अपने यूट्यूब चैनल पे, बट ही इज़ नॉट नोन फॉर दैट. ही इज़ नोन फॉर TFT और TLS. सिमिलर चीज़ केंड्रिक लमार ने भी करी है अपनी पहली एल्बम के साथ, यानी कि गुड किड मैड सिटी, जिसमें इतने सारे वॉइसेस हैं, इतने सारे साउंड हैं कि वो एल्बम को तुम जितनी बार भी सुनोगे ना तुम्हें रिप्ले वैल्यू मिलेगी. वो एल्बम हमेशा तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस देती है बिकॉज उसमें इतनी सारी डिटेल्स हैं. और कहीं ना कहीं ये चीज़ TFT और TLS पे भी आ जाती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ सीधे मौत की एल्बम से या फिर फ्रापे एस की एल्बम या फिर प्रदीप की एल्बम पे भी आ जाती है, क्योंकि साउंड उनका इतना फ्रेश है और इतना वे एड ऑफ टाइम है. और केंड्रिक ने भी उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं किया था कि बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया प्रोडक्शन पे. नहीं, केंड्रिक लमार का जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टली उनका इंटरव्यू सुनो तो उन्होंने यही बताया कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट जितनी भी चीज़ें थी उनके पास उन्होंने उनको क्रिएटिवली यूज़ किया है काफ़ी ज़्यादा. So I was very limited, you know. I didn't have too much to play with. I didn't have all the things you need to really go in on a mix. So I just started playing with effects. You know, if I can't play with the beat, then I'll just do something crazy to the vocals. And then from there, once Kendrick and everybody just realized that you could do more than just adding reverb and delay. Right. That's when they just kind of gave me free reign to say, just go crazy. Let's try to find a sound. Let's try to create something together, and that's what we did. तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कौन कौन से इफेक्ट हैं जो ये आर्टिस्ट मेजरली यूज़ करते हैं. कॉमन इफेक्ट, क्योंकि मैं कोई प्रोड्यूसर नहीं हूँ तो मुझे इतने टेक्निकल टर्म नहीं पता, बट जितने हैं उतने बता दूंगा मैं, ताकि अगर तुम एक लिसनर हो तो तुम एक अलग पर्सपेक्टिव से गाने सुन पाओ आगे जाके, और अगर आर्टिस्ट हो तो तुम्हें एक तरीका मिल जाए डिफरेंट तरीके से अपने गाने बनाने का. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इफेक्ट यूज बाय रैपर इज़ वॉइस लेयरिंग, जहाँ पे वो अपनी वॉइस लेयर कर देते हैं 2 बार या 3 बार. और इस चीज़ को फेटल ने, लॉजिक ने, मैक मिलर, केंड्रिक लमार और कान्ये वेस्ट, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है. अगर तुम गुड किड मैड सिटी सुनो या फिर 808 एंड हार्टब्रेक सुनो तो तुम्हें ये लेयरिंग इफेक्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेगा, चाहे वो अपनी वॉइस 2 बार लेयर कर रहे हो, और डबलिंग विथ फीमेल वॉइस, और डबलिंग विथ लोअर और हायर पिच वॉइस, और रीटेक. अब सबसे इंटरेस्टिंग रीटेक है. पहले टेक में रैपर एक फ्लो में गाता है जिसको हम फ्लो ए बोल देते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल फ्लो होता है जैसा कि हम रैप कर रहे हैं रॉ वॉइस में. और दूसरे फ्लो में यानी कि फ्लो 2 में जो कि दूसरा रीटेक होता है, उसमें रैपर वही सेम लिरिक्स को कैसे भी गा सकता है. ही कैन सिंग, ही कैन मम्बल, ही कैन हार्मोनाइज, जो कि एक लेयर तो बना देता है और साथ में एक एनहेंसिंग इफेक्ट भी देता है. अब इसको समझने के लिए तुम्हें स्निपेट सुनानी पड़ेंगी मुझे. Wake me up, give me space, and I just wanna go far away. I don't wanna reach my destination, and maybe one day I can say I'm proud of who I became. But I don't wanna wake up soon,
get out of my own mind. I'm looking for myself, I see no sign. I need you to take me away, 'cause I don't think I ever wanna stay. You got me feeling so alone. You got me feeling so alone right now, 'cause I just wanna go so far away, away. You got me feeling looking at this diamond. नाउ यू गेट द पॉइंट राइट. अब मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ भी रही है, नहीं समझाऊंगा मैं. खैर, जब मैंने TLS का ब्रेक डाउन किया था तो फेटल और मेरी काफ़ी लंबी बात हुई थी, जिसमें उसने मुझे बताया था कि फीमेल वॉइस इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू साउंड, और फीमेल वॉइस इज़ द बेस्ट साउंड, एंड ही वॉज नॉट सिंपिंग. क्योंकि अगर तुम TLS सुनोगे, जो फीमेल सैम्पल्स हैं, दे आर पुटिंग यू इन डिफरेंट जोन. उनकी एक अलग ही वाइब है. There was something I was meant to do. Somewhere I was meant to be. देखो, फीमेल वॉइस मेल वॉइस का एक अपोजिट एंड है. पहली बात तो मेल वॉइस फुद्दू हो सकती है, फीमेल वॉइस फुद्दू नहीं होती. बहुत ही रेयर केसेस होते हैं किसी लड़की की आवाज़ फुद्दू हो. तो फीमेल वॉइस एक बाइपोलर है मेल वॉइस का, ठीक है. तो फीमेल वॉइस करती क्या है कि गाने की वाइब को एक स्टिलनेस देती है, एक ब्रेक देती है. जैसे तुमने मुंहफाड़ का गाना सुना होगा, खुश हूँ, मैंने बहुत सुना है, लाइक 200-300 बार सुना होगा मैंने वो गाना. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. तो उस गाने में जो मुंहफाड़ का वर्स है वो तुम्हें धीरे धीरे अपलिफ्ट करता है. देन बैम, एक जी का कोरस आता है और तुम एक कामिंग स्टेट में चले जाते हो. वो कोरस तुम्हें एक स्टिलनेस और एक लेवल देता है. देन वापस मुंहफाड़ का वर्स आता है विच अगेंस्ट अपलिफ्ट्स यू, और फिर एक्जी का कोरस आता है. आई डोंट नो तुम समझ पा रहे हो या फील कर पा रहे हो मुझे, बट तुम एक बार वापस गाना सुनोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. एंड लास्टली ईयर प्लीजिंग होती है ये चीज़ें, तुम्हारे गाने को एक एस्थेटिक देती हैं. देन वी हैव अनदर थिंग नोन एज क्वायर. क्वायर यानी कि लोगों का बैंड होता है, वो हार्मोनाइज करता है सॉन्ग को. Kanye layers vocals like choirs a lot. He does it through outlate registration on songs like Hey Mama, Celebration, and Crack Music. On these tracks, he's not really manipulating the vocals at all. जनरली ये चीज़ एनिमे में यूज़ होती है. जो भी लोग एनिमे देखते होंगे उन्हें पता होगा, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, फुल मेटल, ये सब एनिमे में जब कोई इंटेंस या फिर कोई शेडी चीज़ दिखानी हो ना तो वो क्वायर का यूज़ होता है. बेसिकली मुझे ये वीडियो का आइडिया अटैक ऑन टाइटन देख के ही आया था. खैर, कोई इफेक्ट को इतना भी यूज़ मत करना कि वो क्लीशे हो जाए, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना वो वाइब का है, वो स्वैग का है, वो एक साउंड वाली वेव आई हुई है उसका है. लिरिक्स का ज़माना गया. इंडिया में भी देखो, लिरिक्स से लोगों का ध्यान शिफ्ट होगा, लोगों की वाइब शिफ्ट होगी जब, तो लोगों को ये बार्स, ये पंचेस रिपीटिव लगने लगेंगे, इवन लगने लगे हैं. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी लिरिक्स बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर दो, और ऐसा भी नहीं है कि तुम अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही मिनिमल कर दो किसी आर्टिस्ट से कि मुझे लिरिक्स चाहिए नहीं है बट म्यूजिकल है बंदा तो काफ़ी है. नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं. तुम्हें एक बैलेंस मेंटेन करना है दोनों के बीच में, और आई थिंक ये बैलेंस केंड्रिक लमार, कान्ये वेस्ट, फेटल, प्रभदीप, इन लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है. और अभी रिसेंट में रफ्तार इज मेंटेनिंग दैट बैलेंस प्रीटी गुड. I feel like it's really interesting now in with what's going on in hip hop. You seem it's almost like you're a throwback to when lyrics mattered, because it feels like so much of hip hop today is more about vibe and swag and personality and less about words. And it sometimes sounds like even the MC doesn't know what he's saying on a lot of today's record. Right. So it's interesting to hear the sort of clarity and depth that you go lyrically. The another effect you heard the most is use of low pitched and high pitched voices to create different zone, to create different perspective, or to create alter egos. जैसे एक गाना है माई डार्लिंग एमिनम का, रिलैप्स में था शायद. तो उस गाने का सीन ये है कि उसमें एमिनम की आवाज़ नॉर्मल रहती है और स्लिम शेडी की आवाज़ लो पिच्ड रहती है, और दोनों के बीच में 2 वर्स तक आर्ग्यूमेंट होता है. तो ये आर्ग्यूमेंट बैक एंड फोर्थ होता है. थर्ड वर्स में जाके जो लो पिच्ड वॉइस होती है वो लेयर्ड हो जाती है नॉर्मल वॉइस से एमिनम की, जो कि आइडिया देता है कि अब स्लिम शेडी ने एमिनम को पोजेस कर लिया है और स्लिम शेडी वन दैट आर्ग्यूमेंट और स्लिम शेडी टू ओवर एमिनम. तो अब ऐसा नहीं है कि तुम लो पिच और हाई पिच वॉइस को केवल पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए यूज़ करो या फिर केवल अल्टर ईगोस दिखाने के लिए यूज़ करो. दिस इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल कि तुम्हें कुछ चीज़ें करनी है, उनको करने के बस लिमिटेड तरीके हैं जो मैं बता रहा हूँ. नहीं, दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट आर्ट कि तुम कुछ भी कर सकते हो जब तक वो तुम्हारे प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस को एनहेंस कर रही है. यू कैन हार्मोनाइज द शिट आउट ऑफ योर सॉन्ग एंड दैट विल नॉट मेक यू अ सॉफ्टी रैपर. आज के ज़माने में अब ये ऑर्थोडॉक्स वाली चीज़ें चली गई हैं, और तुमसे जो भी कह रहा है ना कि अगर तुम हार्मोनाइज कर रहे हो या फिर गा रहे हो तो तुम एक रैपर नहीं हो, देन हिज विजन इज़ आउटडेटेड. जैसे दुनिया को देखने का एक बेटर तरीका है ह्यूमैनिटी, ना कि रिलीजन, ना कि कलर, ना कि कास्ट, वैसे ही क्रिएटिव फील्ड को देखने का बेटर तरीका है आर्ट.
ना कि मूवीज़, ना कि पेंटिंग, ना कि जॉनरास. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इफेक्ट, वी हैव पैनिंग. पैनिंग का यूज़ तब होता है जब एक बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस्ड सिनेमैटिक इफेक्ट देना हो और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना हो, या फिर यूज़र को एक मेडिटेटिव स्टेट में डालना हो ताकि जो म्यूज़िक बज रही है वो दिमाग में स्टे करे. दैट्स वेयर वी यूज़ पैनिंग, एंड दिस इज़ पैनिंग. Yo, I haven't heard this in like years, man. The last time that I heard like old music was about 124 years ago, man. I can't control the world around me getting colder. Plus I got enemies over my shoulder. I'm just grateful for another day, another chance, and I won't let. Secondly, panning can be used to portray the idea of two extreme ends. जैसे कि इक्का का जो कन्वर्सेशन ट्रैक है उसमें एक सुसाइडल वॉइस है और एक अपलिफ्टिंग वॉइस है. जो सुसाइडल वॉइस है उसकी आवाज़ तो मैं लेफ्ट ईयर में आएगी और जो अपलिफ्टिंग वॉइस है उसकी आवाज़ तो मैं राइट ईयर में आएगी. दैट इज़ द बाइपोलर इफेक्ट, यानी कि दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो द एंजल एंड द डेविल ऑन योर शोल्डर. दिस इज़ वॉट इट इज़ पोर्ट्रेइंग. I do a lot of panning, a lot of stereo imaging. I love doing things that pop out the speaker. I want to be able to do something inside the mix where it be like, especially if somebody's saying something important, I can make that stand out rather than putting a reverb or delay behind it. I want it to like jump. Lastly, we have small sounds and Easter eggs. Easter eggs are tiny details that you purposely hide in your song or video like riddles. So when a keen listener or keen observer find out those lyrics or those details in the video, you leave them surprised. Control the world around me getting colder. Plus I got enemies over my shoulder. I'm just grateful for another day, another chance, and I won't let it. Can you listen the whisper? Okay, listen again. Control the world around me getting colder. Plus I got enemies over my shoulder. I'm just grateful for another day, another chance, and I won't let it. This whisper is giving you the idea that someone who is listening to this song is low-key vibing to it. Now it's on you how you put details in your songs. I really can't tell you much about this. You know, of course, there are certain rhythms and tempos and certain note changes in the music that immediately, you know, appeases the ear. Yeah. But when something just feels good, it can be a tree branch falling off the ground and somebody hitting that right key or that right lyric on that tree branch, and it'd be the biggest thing in life, because you just can't stop sound, you can't stop frequency. I truly believe in music is just like that, and it's simple, you know. Now, time for the climax. The way you produce your songs or bend to genres. It is a fusion of reggae and hip hop. So you ever got a feeling that you are not carrying hip hop because audience thinks that if someone is blending two genres, then he is not hip hop. Like people say King is not hip hop because he sings. But according to me, you both are similar in a way. मैं गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गानों के सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ अलग है. बट हम एक पर्सपेक्टिव से देखें, you both blend two genres. You are a blend of reggae and he is a blend of pop. So my question is, being a purist is necessary or art is an open field and you can run circles around it? What's hip hop, or rather what would be hip hop if it went for genres like funk, dub, reggae, rhythm and blues, performance poetry, jazz, and so many equivalent genres of music from which the former grew and keeps on growing even now. With the inclusive emergence of myriads of new styles and newer forms the former gets exposed to. To crack it in a nutshell, I think hip-hop has evolved a lot from what it used to be and will continue to do so. And hip-hop is more of a cultural movement to me, which empowers people to express through art, basically. And so, for some reason, I do not consider a musical limitation to hip-hop, because to put a musical limitation to something as ever-growing as hip-hop, which takes in elements from different forms of music and makes it anew, I think that would be a very stupid thing to do, because there's so much to explore. And we have always seen hip-hop growing, so we should always allow it to grow even more, to take in newer genres, to make it anew, to have artists from all across, you know, the world, from all across different genres coming in and, you know, having their fill of hip-hop. So that is what I would suggest my viewers to actually have, like a viewpoint. I mean, like, don't be like a hardcore thingy, like. That is going to clear many myths.
डेफिनेटली अबाउट किंग, बट ओवरऑल मैं छोड़ देता हूँ उसे. आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग टू इट. बट डू यू थिंक ग्लोबली एज एन ऑडियंस वी आर इन द एरा ऑफ म्यूजिकलिटी मोर देन एक्सट्रीम लिरिसिज्म? पर्टिकुलरली इंडिया में तो नहीं, बट डू यू थिंक इंडिया में भी ऐसा रिवॉल्यूशन आएगा म्यूजिकलिटी का? I mean, Indian hip hop is actually growing. It's been growing for a decade now. For more than a decade, it's been growing. And from Beat, Orkut, Insignia Rap Combats to having a film on its own to having a reality show like MTV Hustle and many more, which is coming. And we have so many artists of different kind doing their own music and different scenes from smaller towns growing as well. So I believe it has a potential to grow even more, and as we are growing, you know, we will be up to date with whatever that is happening around the world, and I believe that is the best way to go about it. So who do you think gonna get the crowd first? The musical, the genre bending, or the experimental artist and producers versus the orthodox, the old school lyricist type of rappers or, you know, beat producers? The crowd question is kind of weird because I think if your music is good, it can reach a wider range of people. I mean, like it has the potential to reach. And for example, we take it lo-fi hip hop and like take commercial hip hop or banger tracks, you know, which works well in pubs. But then again, that doesn't mean if your music is good, that doesn't mean that it will not fetch you lovers, because there are potential lovers for lo-fi music as well. So I believe, you know, you should actually see like what all the artist is capable of and how the artist is able to explore and find himself or herself in hip hop. So if they can find that, I believe they will get the crowd, because there's a crowd for everything. I mean, like there's a market for everything. So this was EPR. Now listen to my convo with Akshay Dhawan. So now we have Akshay Dhawan, and if you don't know him, he is a friend of mine. And secondly, he is the winner of दिल हिंदुस्तानी सीजन 2, जो कि MTV Hustle से पहले एक रियलिटी शो आया था रैप से रिलेटेड. भाई मैं सीधे आपसे सवाल पूछता हूँ, नो फॉर्मेलिटीज़. सो हाउ नेसेसरी इज इट टू कीप अप विद ट्रेंड्स? क्योंकि आपने शो जीतने के बाद 2 साल का गैप लिया था टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स. You know, at that time you competed against Mufad, and hip hop was very dull back then compared to now, and you competed against Mufad. And if you look at Mufad right now, he is an A-lister right now. So yes, how necessary is it to keep up with trends? Or do you believe in the saying that only dead faces go with the flow? Or sometimes the flow is too strong that it forcefully takes you? तो सॉरी भाई, पहले तो लेट हो गया थोड़ा. बाकी आपका क्वेश्चन था कि हाउ इम्पोर्टेंट, आपने ब्रेक लिया, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू टू कीप अप विद द ट्रेंड? ऑब्वियसली ट्रेंड के साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है. ट्रेंड के साथ तो चलना इम्पोर्टेंट है, बट टाइम से आगे रहना बहुत इम्पोर्टेंट. मैंने म्यूज़िक में आर्टिस्ट के साथ रहा हूँ, जितने अपने प्रीतम दा हो गए या कोई भी बड़े आर्टिस्ट हो गए, वो 4 साल आगे चल रहे हैं गानों में. मुफड़ भाई हो गए और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हो गए, काम में 4 साल आगे चल रहे हैं. मुफड़ भी ने भी EP जो रिलीज़ की, वो मैंने DHH के टाइम पे उनसे सुने थे, वो गाने उन्होंने मुझे सुनाए थे. तो मतलब ट्रेंड के साथ रहना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और टाइम से आगे चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. वो टाइम के साथ करते करते ही आपको आ जाएगा. जब गाने बनते रहेंगे आप और टाइट होते जाओगे अपने काम में, सीन और बढ़िया होता जाएगा. So what about money? Will you make an experimental track for the sake of money? You know, kind of like hit or miss. मैं बिल्कुल ही भद्दे गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक जो आजकल रीमिक्स आ रही हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट अ वेरी गुड ट्रैक और हाउ डू आई पुट दिस, और एन वेरी अंडररेटेड ट्रैक. थिंग्स कैन गो बोथ वेज, यू नो. ऑब्वियस है, मनी तो किसी भी आर्टिस्ट को एक कहते ना मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है. कोई भी स्ट्रीम हो, म्यूज़िक नहीं बोले बट कोई भी स्ट्रीम हो, तो यस मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हर चीज़ में. मनी के बिना ऑब्वियसली, मैं जब मुंबई में नया नया था, काफ़ी सिचुएशंस ऐसी वैसी हो रही थी. जब पैसों की तंगी टाइप वो सीन हो जाता है ना, दिमाग सही से फोकस नहीं कर पाता है काम पे. तो मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर मेंटल स्टेबिलिटी. तो मेरा कभी सच सीन नहीं रहा. आई थिंक मेरा फैन बेस इतना अच्छा है कि मैं हार्डकोर रैप करूं या सॉफ्टकोर रैप करूं. शो में मैंने बेसिकली सॉफ्टकोर रैप किया था. लिरिक्स सिंपल थे बट हार्ड हिटिंग थे. बैंग बैंग नहीं था, मतलब नॉर्मल मेरी वोकल टोन इसी में रहती थी, या तह वो रहता था.
उसको भी उतना ही प्यार मिला। और अब जो मैं कर रहा हूँ, मतलब वर्सेस डालता हूँ जो इंस्टा पे, फ्लोज वाले, टाइट मीटर, पॉलिश किया जो थोड़ा बहुत, वो भी लोगों को पसंद आता है। तो मुझे लगता है मेरा फैन बेस ही ऐसा है कि मैं अगर सॉफ्ट कोर भी कर रहा, हार्ड कोर भी कर रहा, पसंद आएगा। मे बी आगे जाके और एक्सपेंड होगा, लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, वो निकल के आएगा कि नहीं यार अक्षय ये करे तो अच्छा, ये करे तो अच्छा। मुझे अभी भी मैसेज आते हैं कि आप माँ वाले गाने जैसे गाने निकालो, ऐसे गाने निकालो, ऐसे गाने निकालो। तो मतलब हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, बाकी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे हर एक बंदे ने कहा है कि यार तुझे कमर्शियल गाना करना है, कमर्शियल गाना करना है। और मैंने कभी खुद को, अपने आप को उस जोन में भी नहीं देखा कि मैं एक हार्डकोर रैपर हूँ या वो कोर रैपर, कोई भी। मुझे बस ये पता था मैं इस गेम में एंटर कर रहा हूँ, अगर मुझे सब करना है, मुझे कॉम्पोजिशन दे दो, मुझे प्रोडक्शन दे दो, मुझे लिरिक्स राइटिंग दे दो, मुझे सब दे दो। मैं टोटली एक आर्टिस्ट मुझे बनना है। मुझे ये नहीं कहना कि यार अक्षय सिर्फ रैप करता, मैं एक आर्टिस्ट बोले। मेरी मेन विजन शुरू से रही है, उसी पे चल रहा हूँ, और वो सही भी हो रहा है काम। जो प्रोड्यूस करने लगे मैंने 1 साल में प्रोडक्शन पे टचवुड अपना हाथ काफ़ी अच्छा कर लिया है। लिरिक्स तो चलो लिख ही रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मैं अपना हिप हॉप को पूरा एक्सप्लोर करूँगा। बीट बॉक्स भी थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ, डांस तक पे आऊँगा, मतलब ओवरऑल पैकेज होगा अक्षय धवन। मैंने वो अपनी एक विजन रखी हुई है। So this is it, I guess. This is the end of the video, and if you like it, consider rating like and sub if you want. And as I told you earlier, I am not Hindustani Bhau, so I will not ask you to go fuck yourself if you didn't like the video. So consider leaving the comment. Follow me on Instagram. Wait for the next video. Till then, Adios, adios, adios. Adios, adios, adios. मैंने बोला सबको adios. Adios, adios, adios.